Hello to all. We are going to start fundamentals of computers. The topics covered are about computer, what is a computer, benefits of using a computer, how does a computer work, input devices, storage devices and processing devices. Today, in the age of electronic revolution, computer has become an integral part of our life. We can say that computers have entered each and every walk of life, be it at home, at work, or at school. Most of our daily activities either involve the use of computer or depend upon the information derived from the computer. With a computer at home, you can check your bank account, pay bills, transfer funds, buy or sell products, evaluate financial plans, etc. At the grocery store or a CSD canteen or a shopping mall or somewhere where you want to purchase some product, a computer tracks your purchases and calculates the amount of money you owe. Many school, colleges and homes have computer for educational purpose. Computers have become a source of entertainment. You can play games, listen to music, watch a video or a movie, read a book or a magazine, compose a video, edit or save a photograph, plan a vacation, and do many more things. People use computers as a source of communication. You can send email, you can transmit voice, sound, video and graphics with today's technology. To be successful in this world, it has become essential that you must be computer literate. अगर आपको आज की डेट में सक्सेसफुल होना है तो आपको कंप्यूटर्स का पूरा नॉलेज होना चाहिए. Being computer literate means you have the knowledge and understanding of computers and their use. Beta, this is your computer, right? This device is called monitor, on which we see the output like videos or text material or graphics material. हमें कुछ भी वीडियो, टेक्स्ट या ग्राफिक्स देखना हो, इमेजेस देखनी हो तो हम इसी डिवाइस पे देखते हैं. ठीक है. ये कीबोर्ड है. कीबोर्ड इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस. ठीक है. ये इनपुट डिवाइसेस में आता है कीबोर्ड. देन कम्स योर माउस. Mouse is also an input device. With the help of mouse, you can give commands to the computer system. All these three devices are connected to the system unit. This is called the system unit. And the system unit, I'll show you the system unit from inside also. ठीक है. इसके अंदर एक मदरबोर्ड होता है. मदरबोर्ड के ऊपर प्रोसेसर, जिसे हम सीपीयू बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, वो माउंटेड होता है. और इसी के अंदर आपकी हार्ड डिस्क यानी कि मेमोरी वो भी स्टोर्ड रहती है. सीडी रोम या सीडी राइटर वो भी इंस्टॉल्ड रहता है. ठीक है. और ये सारी डिवाइसेस जो हैं ये आपकी इस सिस्टम यूनिट से कनेक्टेड है. ठीक है. एंड ऑल दीज डिवाइसेस केम इन द कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर. ये सारे कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर पार्ट्स को ही हम कंप्यूटर हार्डवेयर बोलते हैं. ठीक है. एंड
Computer software control all these devices. Computer software will tell that how these devices will work. Okay, so this is computer. A computer is an electronic device which works on the commands or instructions given by the user. And who is the user? Who is using the computer? So computer user will give commands to the computer, and computer will accept those commands and work on those commands. How it works? It works with the help of software, and software is nothing but a group of commands stored in computer, right? Benefits of computer. Number one is accuracy. Computer always give us accurate or correct answers, but its accuracy is always depends upon the user's input. Next is speed. It can process million of programs within a microsecond. It can perform complex tasks in a blink of an eye. So it's very fast. Computer is very fast. Next is diligence. It can do repeated tasks again and again without getting tired or irritation. But a human being do the same task, they get fed up with a monotonous job and lost their concentration. जब भी हम किसी ह्यूमन बीइंग को एक ही काम बार बार करने के लिए देंगे, वो उसमें परेशान हो जाता है और थोड़ी ही देर के बाद में उसका कंसंट्रेशन उस जॉब से छूटने लग पड़ता है, जबकि कंप्यूटर ऐसा नहीं करता और वो रिपीट करता रहता है उस टास्क को जब तक कि वो टास्क कंप्लीट नहीं हो जाती है. नेक्स्ट इज वर्सेटैलिटी. Versatile. Computer can do multiple tasks at a time with the same accuracy and speed. कंप्यूटर एक से ज़्यादा काम सेम एक्यूरेसी और स्पीड से कर सकता है और एक साथ कर सकता है. ठीक है. देन कम्स हाई स्टोरेज कैपेबिलिटी. कंप्यूटर कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा विद इन इट. कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो बहुत हाई कैपेसिटी की होती है और आप उसमें बहुत सारे फोटोग्राफ्स, वीडियोस, सॉन्ग्स, टेक्स्ट मटेरियल, टेक्स्ट बुक्स और भी बहुत सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सेव कर सकते हैं. What you can do with a computer? A computer is an electronic device which can do many things. You can use a computer for creating documents, working with number of numbers, teaching, chatting. Chatting means आप एक दूसरे से बात कर सकते हो ऑनलाइन, कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है. डिज़ाइनिंग बिल्डिंग्स, क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स, डिज़ाइनिंग में यूज़ हो सकता है. गेम्स के लिए यूज़ हो सकता है जो कि बच्चे बड़े खुशी से खेलते हैं. रिसर्च के लिए कंप्यूटर्स यूज़ किए जा सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर टाइम मैनेजमेंट. इट कैन बी यूज फॉर लर्निंग एज यू आर ऑल्सो लर्निंग कंप्यूटर्स थ्रू दिस computing device. Buying and selling products, playing music and video, and also it is used for video conferencing. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है जिसमें कि आप दूसरे आदमी से या किसी दूसरे पर्सन से इंटरनेट के थ्रू बात कर सकते हैं, जैसे कि आप आमने सामने बैठ के बात करते हैं. ओके. नाउ हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क? A computer works very fast and accurately. A computer does 4 main jobs. It inputs data, processes it, displays the output from the data as information and finally stores it. So input कहाँ से होगा? कीबोर्ड से कमांड आप इनपुट करते हैं. 5 plus 3. This is the data that you gave to computer, right? Now the CPU, the processor will process it. So it will process the result of 5 plus 3 and then it gives the output on the output screen, that is the monitor, and after giving the output it will store the information on the hard disk.
so it will store the information there. So now we will talk about input devices. The number one input device is keyboard, right? So a keyboard is an input device that contains keys. You press its keys to type information and enter instructions for the computer to follow. आप इन्हीं कीज को यूज करके कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन जो है वो फीड करते हैं, राइट? देन कम्स योर माउस. अ माउस इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस and it is also known as a pointing device with which you point any file on the computer and you can open any file on the computer by double clicking over it. So mouse में ये left button है, ये right button है, ये scroll button है. इससे आप documents को scroll कर सकते हैं up and down, right? This is all about mouse. ये एक wired mouse है. एंड दिस इज अ वायरलेस माउस. इसमें कोई वायर नहीं होती है, राइट? ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वायरलेस माउस. और ये वायरलेस माउस कैसे कनेक्टेड होता है? ये लैपटॉप या कंप्यूटर में ये छोटी सी डोंगल इसके साथ में आती है. इसको आप लैपटॉप की यूएसबी में लगाएंगे, यूएसबी पोर्ट में, और उसके बाद में आप माउस का बटन ऑन करेंगे. ये ऑफ है, ये ऑन कर दिया और ये आपका जो माउस है ये काम करना स्टार्ट कर देगा. सो नेक्स्ट वन इज स्कैनर. आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑफ स्कैनर, राइट? इट इज अ प्रिंटर कम स्कैनर. अ स्कैनर विल स्कैन द इमेज. सो अ स्कैनर इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस. इट इज यूज्ड टू सेंड images and text directly into the computer. So there are two types of scanners. One is flatbed scanner, just like this one, and the another one is handheld scanner, with which shopkeepers can scan the barcodes, just like a barcode here. It is scanned by the handheld scanner. हाथ में पकड़ने वाला एक छोटा सा स्कैनर होता है जो कि शॉपिंग मॉल्स में काफ़ी यूज़ किया जाता है. एंड after that the scanner will scan the barcode and send the code to the computer. This is our next input device. It is a joystick, and with this joystick we can play games on computers. ठीक है, इससे हम गेम्स खेल सकते हैं. ये PlayStation 2 की जॉयस्टिक है. वैसे इसी में USB केबल के साथ भी जॉयस्टिक आती है जो कि आप कंप्यूटर पे लगा के कंप्यूटर गेम्स खेल सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द डिजिटल कैमरा. ओके, and this camera, you know it very well that it is used for getting digital images, right? This is also an input device. So this is the digital camera. It is used to capture image and store photographs electronically. It stores the images in its memory card. Let me show you the memory card. This is the memory card in which it stores photographs, okay, captured by the digital camera, right? So in this compartment battery is inserted, then it works. Okay, so this is also an input device. Then comes your magnetic ink character recognition reader, MICR reader. ये बैंक्स में ज़्यादातर यूज़ होता है चेक्स को स्कैन करने के लिए. MICR reader is an input device used to read and identify magnetized characters printed on a document such as check. चेक के ऊपर कुछ नंबर्स होते हैं जो कि
मैग्नेटिक इंक में प्रिंटेड होते हैं, मैग्नेटाइज कैरेक्टर्स जिन्हें हम बोलते हैं, उनको स्कैन करने के लिए MICR रीडर की ज़रूरत पड़ती है. सो दैट इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस. ओके. Okay. Our next input device is touch screen. Right? So how it works? When we touch on the screen, it works just like on your mobile phone. Okay. So right. So it is working. So this screen is called touch screen. Right? And the best example of touch screen is on your mobiles. Right? So this is a touch screen. Okay. And this device is called tab. ठीक है. It is also a mobile device which can be used for viewing images, videos, information on the internet. Internet can be accessed on this device, and it is a tablet, so you can connect it with various devices. You can connect keyboard, mouse, and you can also connect projector with this type of tab. Alright, so this is a tablet. Okay, this is your monitor. It looks like a television screen. It displays work done by you or the information you get after processing. Processing के बाद में जो information होती है वो हमें monitor से भी मिलती है. This monitor is also known as screen or display or video screen. This is your printer. It is a laser printer, right? And this one is also your printer. Both are laser printers. And printer is an output device that gives you the output on physical medium such as paper called printouts. पेपर के ऊपर जो प्रिंट्स आते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रिंट आउट, और एक और चीज भी बोलते हैं हम हार्ड कॉपी. The information we get as a printout on paper is called a hard copy. There are different types of printers. So these two are laser printers in which laser technology is used to print text or images on the paper, right? Then comes your inkjet printers. So let me show you inkjet printer. So this is your inkjet printer. It's cheaper than laser printer, but the printing cost is high. This is the inkjet printer. ठीक है. This is the ink tank where your ink is filled. In inkjet printer, liquid ink is used. Right? This is the ink tank printer. Inkjet printer is cheaper than laser printer, but the printing cost of inkjet printer is higher than the laser printer. Then comes your dot matrix printer. The printer contains movable print head with pins that stroke the ribbon, placing a dot on paper. जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स होते थे उनका हेड जो है वो लेफ्ट राइट मूव करता है. दिस इज फोटो ऑफ दिस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एंड इसका हेड जो है वो लेफ्ट राइट मूव करके उसके अंदर पिन्स होती हैं. वो पिन जो हैं वो रिबन के ऊपर जो है स्ट्राइक करती हैं और दूसरी तरफ उसके पेपर लगा होता है रिबन के, जिसके कारण वो जो पिन्स हैं वो कैरेक्टर्स बनाती जाती हैं. These printers are less expensive but are very noisy, and the speed of printer is given in CPS, characters per second. Our next output device is speaker, right? So this is a speaker. It is also an output device. So it generates sound from computer, right? So it is also an output device. Our next topic is storage devices. The storage devices enable you to store data and information. They can hold data, instructions, and information for future use. The different storage devices are hard disk. This is a desktop hard disk. This is also a hard disk, but it is used in laptops. Then your optical disk, then
your pen drive or flash drive, and then comes the memory card. Okay, memory card can be used in cameras, in mobile phones, video recording devices, etc. Okay, so number one is hard disk. The hard drive, also called the hard disk drive, is your computer's main permanent storage area. The hard drive sits inside the computer case or the system unit and stores your programs and documents, right? So ये हार्ड ड्राइव जो है, ये आज जो मेमोरी हार्ड ड्राइव की जो लेटेस्ट आ रही है वो 1024 GB, 2048 GB से लेके 8 TB तक आ रही है और 16 TB तक भी आ चुकी है मार्केट में, राइट? देन कम्स योर ऑप्टिकल डिस्क. दिस इज द ऑप्टिकल डिस्क. Okay, this is the optical disk. This is a simple CD-ROM. 700 MB data is stored in it, which is called compact disk. Another one is the DVD. The DVD can store data up to 4.7 GB, right? And then comes the Blu-ray disc, a new type of DVD format which has a higher capacity and better quality than standard DVDs. And a Blu-ray disc has storage capacity of 100 GB. Yes, it can store up data up to 100 GB. Okay, then comes your flash drive. This one, this is the flash drive of computer. It can be mounted on the USB port of computer, and it is also known as pen drive. It's one of the newest forms of computer storage device. Pen drive is portable and lightweight. It has a storage capacity ranging from 8 GB to 128 GB and can transfer data at a very high speed. Okay, then comes your memory card. This is the memory card. Let me show you the memory card. This is a memory card of a laptop, of a camera, right? So a memory card is a removable storage device, usually no bigger than 1.5 inches in height or width, that you insert in and remove from a slot in a computer, mobile device or card reader or writer. With a memory card reader writer, you can transfer the stored items such as digital photos from a memory card to a computer or printer and get the job done, right? So these are the examples of memory devices. Then comes your cloud storage. It is an internet service that provides storage facility to computer users. Some users choose cloud storage instead of storing data locally on a hard disk or other media. इंटरनेट के ऊपर भी आप डाटा स्टोर कर सकते हैं, कुछ स्टोरेज स्पेस परचेज करके आप अपनी फाइल्स को वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं. इसका मेन बेनिफिट ये है कि आप कहीं पे भी हों, वर्ल्ड में कहीं पे भी बैठे हों, इंटरनेट से कनेक्ट करके आप उस स्टोरेज जो स्पेस आपने परचेज की है उससे आप अपनी फाइल्स को कभी भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं.